Hello everyone, welcome to Passion Studies. So today we will be discussing the sample question paper that was released by CBSE on 9th October 2020, which is based on the rationalized syllabus. However, this is not the latest sample paper that has been released by CBSE, it's of the previous year. So now let's discuss it. So first, let us go through the general instructions that were given. So first, that the paper is divided into two parts, A and B, and all the questions are compulsory. इसका मतलब ये है कि you cannot leave a question, you need to attempt all of them at least. Separate instructions are given with each section and the question wherever it's required, and read them carefully. Okay, also word limit is very important, so do not exceed the word limit when you're answering a particular question. Okay, so now let's move on to the main part. Okay, so if we see, the first portion that we have encountered is the reading section, which comprises of 40 marks, and it's the part A. And so there are two questions, question number 1 and question number 2, which are of the reading section, and both are of 10 marks each. So in total it's for 20 marks, and it's MCQs, so it's for 10 marks each. So for the reading MCQs, you will only be spending approximately 56 minutes. So how did I come up to this conclusion? So 8 minutes for reading both the passage, so into 2, which is 16, and then 2 minutes per question, so there are 20 questions, so 40 minutes. Okay, so total it comes out to be 56 minutes. Okay, both of them together. Fine. So whenever you're reading, give 8 minutes to your reading the passage and 2 minutes per question. Okay, वैसे ही आपको बहुत टाइम दिया जा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना कि आप पैसेज ध्यान से पढ़ें, केयरफुली पढ़ के आंसर करें, ताकि फैक्चुअली वो इनकरेक्ट ना हो. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन. ऑल्सो एक बात का ध्यान रखना कि इन क्वेश्चंस में 11 पार्ट्स दिए होते हैं. सो फॉर एवरी क्वेश्चन 1 and 2 बोथ रीडिंग पैसेज के, यू हैव 11 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 10. ओके, सो इट्स 1 into 10. एंड अगर आप बाई चांस 11 के 11 ही अटैम्प्ट करते हैं, देन ओनली फर्स्ट 10 ही काउंट होंगे. ठीक है, तो अगर उसमें से आपका गलत हो गया और 11th वाला करेक्ट है, वो काउंट नहीं होगा. तो इस बात का ध्यान रखना, यू नीड टू अटैम्प्ट ओनली 10 out of 11. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज पार्ट ए का सेकेंड sector we can say, which is the literature MCQs. Okay, so part A is basically all your MCQs. The literature section, so as we can see, it is also for 20 marks, and there are 20 MCQs in it. And how much time should you be devoting to each of them? 2 minutes. 2 minutes per question, so again this comes out to be 40 minutes. Okay, so total for the objective part, you should be giving almost 1 hour 40 minutes. Okay, now let's move on to the next section. Okay, now we have come to part B, which comprises of your writing section. तो मतलब इसमें आपका मोस्टली राइटिंग का पार्ट है, तो इसमें MCQs आपको नहीं मिलेंगे. हाउएवर आपको चॉइस मिलेगा कि 2 क्वेश्चंस में से आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं. ठीक है, सो वील डिस्कस दैम. सो जैसे यहाँ पे फर्स्ट वी सी राइटिंग सेक्शन, ये 16 मार्क्स का है. वील डिस्कस हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर. There are 4 questions in total. Okay, 2 short writing, 2 long writing. We have already made a video for the writing skill section and the reading skill section, and I have also discussed how to attempt the paper and how much time you should be devoting. So do check out the channel playlist for class 12th English. Now अब हम इसमें डिस्कस करते हैं. So first इसमें आपको क्लासिफाइड ऐड बनाना है, एंड सेकेंड इसमें आपको नोटिस लिखना है. नाउ आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर नोटिस, बिकॉज नोटिस में बहुत सिंपल होता है, टू द पॉइंट होता है, और इसमें लिखना भी कम पड़ता है. मोस्टली इसमें ज़्यादा एम्फेसाइज फॉर्मेट को दिया जाता है, वेराज क्लासिफाइड इसमें हमें कंटेंट को दिया जाता है. तो काफ़ी बार ऐसा होता है, हम काफ़ी पॉइंट्स मिस आउट करते हैं. सो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट यू शुड गो फॉर द नोटिस वन. ओके, सो आपने नोटिस अटेम्प्ट किया, सो इट्स फॉर 3 मार्क्स. नेक्स्ट यू हैव अ चॉइस बिटवीन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, मतलब रिप्लाई है ये. सो दिस इज रिप्लाई, हमने डिस्कस किया था जब हमने इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज किया था. एंड सेकेंडली इन्विटेशन. ओके, सो ये है इनफॉर्मल इन्विटेशन और ये है फॉर्मल रिप्लाई. ओके, सो
आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, इसमें यू डोंट हैव मच ऑफ अ डिलेमा बिकॉज दोनों 50 वर्ड्स के हैं, तो आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं. इधर आई वुड सजेस्ट आप इनफॉर्मल के लिए जाएं बिकॉज उसमें गलतियों की चांसेस कम होती है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लॉन्गर क्वेश्चंस. सो therefore 5 marks, and here you have been given the choice between a letter to the editor and a job application. देखो यहाँ पे ना जॉब एप्लीकेशन में यू हैव बिन गिवन अ चॉइस. अब इफ़ यू सी जॉब एप्लीकेशंस लंबे होते हैं, उसमें आपको लेटर भी लिखना पड़ता है और बायोडेटा भी, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. सो इन दिस केस यू शुड ऑलवेज गो फॉर द लेटर टू द एडिटर. ओके, ये टाइम सेविंग होता है एंड यू कैन एक्चुअली write a good letter within a short period of time and also check it. ठीक है. So you should give approximately 8 minutes to it only. Okay, not more than that. Next आता है हमारा either you have an option for magazine reports or you have the option for newspaper report. Okay, so in this case you can go for either ones because already pointers given है, तो इनमें से दोनों का लेंथ ऑलमोस्ट सेम होता है और अलग से कोई डिफरेंस नहीं है. इट इज़ दैट द फॉर्मेट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. तो आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो. ओके, अगेन टाइम डिवोटेड शुड बी 8 minutes ओनली. ओके, सो टोटल अगर देखा जाए आपका राइटिंग सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ ऑल इन ऑल, अगर हम बात करें, it should take not more than half an hour. Okay, so 30 minutes maximum I'm telling you, the complete writing section. ठीक है, क्योंकि इसमें शॉर्ट कॉम्पोजिशंस 2 हैं और 2 लॉन्ग कॉम्पोजिशन है जिसमें 10 minutes ही लगने चाहिए. ठीक है, सो 30 minutes में यू शुड बी डन विथ योर राइटिंग सेक्शन. ज़्यादा से ज़्यादा टेक 45 minutes. ओके, मैक्सिमम. इससे क्या होता है, आपका रिविजन टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है बट इट्स वर्थ इट. ओके, अगर आप ध्यान से लिखें, लेकिन मेक श्योर 45 minutes एक्सीड ना करें वरना आपका पेपर छूट जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन. सो अब जो हमारा लिटरेचर सेक्शन है ये 24 marks का है. ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें प्रोज और पोएट्री दोनों ही आते हैं. सो देर आर 7 questions of 2 marks. ओके, 7 questions of 2 marks and 2 questions of 5 marks each. Okay, so इसके लिए 7 questions which are of 2 marks you should ideally take 3 minutes per question, and for the longer ones you should take 8 minutes. Okay, so if we see total time should be how much, 40 minutes approximately. Okay, I'm giving you an approx. So here you have to attempt only 5 questions out of the 6 questions. So if you attempt 6, like I said, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, उल्टा टाइम कंज्यूम होगा, तो आप बाकी का क्वेश्चन छूट जाएगा. सो मेक श्योर यू राइट शॉर्ट वन. सी इट्स ओनली फॉर 30 to 40 words, तो कीप द आंसर शॉर्ट. लाइक 30 to 40 words मीन्स 2 to 3 lines और मैक्सिमम 4 lines. ओके, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5. यू मे चूज एनी 5 जो आपको ईजी लगता हो. देन जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी अगेन 2 out of the 3 questions. सो क्वेश्चन जब भी गिवन हो ना, रीड इट वेरी केयरफुली ताकि आप कोई मिस्टेक्स ना करें व्हेन एवर यू अटेम्प्टिंग इट. और हमेशा वर्ड लिमिट चेक करते रहें क्योंकि हो सकता है वर्ड लिमिट या तो बढ़ा दिया जाए तो कमा दिया जाए. आप हमेशा वर्ड लिमिट के आसपास ही आपको रहना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ फॉर द लॉन्ग वंस. ओके, सी अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो यू हैव दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन. सो आपको जो भी जिस चैप्टर से भी ज़्यादा फेमिलियरिटी लगे, जो चैप्टर आपको ज़्यादा बेटर समझ में आता हो या याद है, या फिर जिस क्वेश्चन को आपको लगता है आप बेटर अटैम्प्ट कर सकें, आप यू शुड गो फॉर दैट वन एंड कीप इन माइंड द वर्ड लिमिट. डू नॉट एक्सीड इट. ओके, क्योंकि अगर आप एक्सीड करोगे यू विल ओनली बी वेस्टिंग योर टाइम. ठीक है. सेम गोज फॉर दिस वन. दीज आर द लॉन्ग क्वेश्चंस. ओके, यू शुड बी टेकिंग ओनली 8 minutes per question like I had discussed. ठीक है, so 8 into 2 which is 16 marks. So this has been included in the 40 minutes that I gave you for the whole literature section. ठीक है. So I hope this would have given you a rough idea as to how to attempt the paper. तो आपको एक almost approximate वो आ गया होगा कि आपको पेपर कैसे attempt करना है. And अगर आपको कोई भी doubts हो, leave it down in the comment section. I will definitely reply to you. Thank you so much for watching. If you have any doubts, do let me know. Thank you so much. I hope this helped you.